अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi Mishra. Let's see what we have lined up for you this week. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan reeling under high inflation. People in POK Gilgit-Baltistan oppose 2023 digital census by Pakistan. Lieutenant Governor inaugurates multi-level parking facility in Jammu. Exhibition cum seed Mela organized in Shalimar University of Srinagar. And in our special section of Incredible India, we'll take you to see how the colourful festival of Holi was celebrated with great religious fervour in northern part of the country. Runaway inflation, food shortage and the apathetic attitude of the Gilgit-Baltistan government have collectively pulled the people of the region in a deep state of poverty. The residents are finding it hard to make ends meet as the prices of petrol and other basic commodities skyrocketed in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. We have a report. Gilgit-Baltistan is in the grip of acute poverty. The residents are finding it hard to even survive ever since hyperinflation struck the illegally occupied region. The prices of basic needs such as petrol, wheat and other essential commodities have spiraled out of control. The people in the region blame the apathetic government in Gilgit-Baltistan for not taking any step to curb inflation. महंगाई ने गरीब जो तबका है उसका तो जीना मुहाल करके रख दिया है। इस वक्त ज़िला गेज़र के अंदर दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर जो गरीब तबका है वो मुकम्मल तौर पर परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं लोग इस महंगाई की वजह से। तो हुकूमत को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इस खुद साख्ता जो महंगाई है इस पर काबू पाए। बाकी तो हुकूमत आए रोज़ महंगाई में इजाफा करता जा रहा है। The labor class of the region that has been living on daily wages is out of work and forced to survive in penury. Owing to inflation, contractors in Gilgit-Baltistan too are tight-handed in absence of any new infrastructure project. हर बंदे की जेब इस वक्त खाली है, ना ही कोई तरक्याती काम हो रहा है, ना ही ठेकेदार बरादरी के पास पैसे हैं, वो भी महंगाई का रोना रोते हैं, बिल पास नहीं होने का रोना रोते हैं। तो इसकी वजह से जो आम लेबर है उसको तो मजदूरी ही नहीं मिल रही, कहीं पर वो काम ही नहीं मिल रहा उनको। जो बंदा दिन को दिहाड़ी कमा के रात को अपने बच्चों के पेट पालता है वो तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त खाली हो चुका है, परेशान हो चुका है। जिसके पास रात को खाने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी के पैसे नहीं है लोगों के पास। The stooge government and the administrators in Gilgit-Baltistan are scrambling for higher political positions rather than taking some effective measures to curb inflation in the region. They look more inclined to making their goodwill with their masters sitting in Pakistan, who would never want any resolutions to the problems of Gilgit-Baltistan. अगर हम सियासी हुकूमत की बात करें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो वो अवाम की तरफ देखती ही नहीं है। वो अपने सीट बचाने के चक्करों में है, कोई स्पीकर से डिप्टी स्पीकर बनने के चक्कर में है, कोई डिप्टी स्पीकर से या स्पीकर से जाके वज़राला बनने के चक्कर में है। पूरे 3 साल हो गए हैं इनकी हुकूमत को यहाँ पर बने हुए, अभी तक तो ये अपने सियासी मामलात के अंदर ही चल रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ इनका कोई तवज्जो नहीं है।
massive anti-government protests are erupting all across the illegally occupied territory against inflation. The economically crumbled Pakistan is, however, a mute spectator in the scenario where its illicit policies and nefarious schemes have yet again failed to appeal masses in the region. Let's move to Pakistan-occupied Kashmir, where the people are strongly opposing the digital population and housing census by Islamabad. There are instances of people confronting the officials carrying out the digital census as the residents do not consider the illegally occupied POK and Gilgit-Baltistan as part of Pakistan. We have a report. The 2023 digital census proposed by Pakistan has been flatly rejected across the illegally occupied regions. People are bracing up to resist the government's agenda, which they have termed arbitrary and unlawful. In a preemptive measure to quell dissent and prevent potential uprising against the government, authorities have imposed Section 144 in the region. They are imposing Section 144, which bars more than 5 people to gather at any given spot in Gilgit-Baltistan. And they have banned all jalsas, public meetings, muzahiras, protests on inter-district link roads, including Skardu, including Juglord Road, and all of these. This is totally unacceptable, because we have a right to protest against the atrocities that are being forced upon us. Amjad Ayub Mirza, a human rights activist from the Pakistan-occupied Kashmir, calls Digital Census 2023 an illegal exercise to erase people's ethnic identities. He called upon human rights activists, traders' organizations and Awami Action Committee to resist the imposition of Section 144 in the illegally occupied territories and defend their right to free speech. They are trying to erase our ethnic identity, and on top of that, when we announced that we are going to protest in all cities in Gilgit-Baltistan, they have now imposed Section 144, and we will defy the Section 144. This is totally unacceptable, and I ask all human rights activists, political activists, traders organizations, transporters organizations, and Awami Action Committee not to abide by this illegal decision to impose Section 144 and curb our freedom of expression, freedom of association. The activist vehemently accuses Pakistan of employing evil strategies to subvert peace and unity in POK and Gilgit-Baltistan. He also pointed out that Pakistan is infiltrating jihadis in Kashmir to undercut the mass movements in the illegally occupied territories. Pakistan has prepared a massive crackdown in POJK and POGB, and simultaneously they have infiltrated many jihadis to act as their proxies, not only for infiltration in Kashmir, but also to help them crush any democratic movement that emerges inside the occupied territories. The economically crumbled Pakistan is employing all means to push Pakistan Census 2023 in the illegally occupied territories. The exercise in turn would embolden their stronghold in the region. The rejection of Pakistan Census 2023 by the people of Gilgit-Baltistan and POK signals
that the residents are in no mood to budge against the illicit means by which Pakistan could anyways take claim on POK and Gilgit-Baltistan. The part of erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, POK and Gilgit-Baltistan were forcefully occupied by Pakistan in 1947. Since then, the people in these parts of the world are facing persecution, intense poverty and lack of basic facilities like education, health and food. Moving on, urban rejuvenation has become the topmost priority of Jammu and Kashmir authorities. A number of projects are in full progress in Jammu city under various initiatives like the Smart City project, which are giving a complete makeover to the city. Recently, a multi-level parking was inaugurated by the Lieutenant Governor at Panchtirthi, Jammu, with a motive to reduce parkings on roads as well as to generate revenue for the city. Take a look. In a major step towards making Jammu city more vibrant and tourist-friendly, a multi-level car parking facility has been constructed in the Panchtirthi area of the city. This much-awaited multi-level car parking facility was recently inaugurated by Lieutenant Governor Manoj Sinha at an event. Congratulating the authorities on construction of the project, Sinha in his speech shared the vision of the government for urban rejuvenation and the efforts being made to achieve three goals: sustainability, efficiency and creation of a vibrant society. He also mentioned about the IoT-based smart parking system which will enable citizens to use the parking facilities without any hassle. जम्मू बस स्टैंड में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग में ऑटोमेटेड कार पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे लोगों को डायनेमिक पार्किंग स्लॉट की जानकारी मिल रही है और अगर नागरिक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बन सकती है। डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की कड़ी में मैं कह सकता हूं कि जम्मू नगर निगम ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है आज की तारीख। The parking facility has been constructed with a total cost of rupees 24 crores and has 2 basements and 5 floors. The facility will be able to accommodate a total of 394 vehicles, out of which 33% is reserved for SUVs and 136 is reserved for two-wheelers. Local residents welcome this new infrastructure with smiles as they hope the region is a budding tourist destination and these steps taken by the authorities will help in boosting their businesses. यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा इस पार्किंग का, क्योंकि यहाँ पे साथ में मुबारक मंडी है। आने वाले टाइम में जो भी श्रद्धालु या कोई भी बाहर से जो टूरिस्ट आएगा वो वहाँ पे उसको देखने के लिए गाड़ी पार्किंग करने की जगह कहीं नहीं है। तो ये जो पार्किंग बनी है बहुत अच्छी जगह बनी है और आने वाले समय में आम शहरों वासियों को भी इसका जो है वो काफ़ी लाभ पहुँचेगा। जाम में जो है बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें भी वहाँ सिदड़ा से जब पंचतीर्थी की तरफ आना पड़ता था तो कई बार कैसा होता था कि आधा घंटा जाम में ही फंसे रहते थे। तो अब हम चाहते हैं कि ये और शहर जो है डेवलप हो। देखिएगा ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हमारा अभी तक ये था और यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट इसमें हमारा जिससे हमारी पार्किंग की समस्या को ये कुछ हद तक सॉल्व करेगा और आगे भी हमारे इस टाइप के प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफरेंट एरिया में चल रहे हैं ताकि लोगों की हम पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये पंचतीर्थी हमारा जो है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर फेमस टेम्पल्स हमारे पंचतीर्थी इसी वजह से इसको बोलते हैं अभी भी, और मुबारक
मुबारक मंडी हमारी जो एक यहाँ की जो सबसे बड़ी धरोहर है, वो हमारी जो है वो भी यहीं पर है, और उसके लिए भी एज ए पार्किंग, टूरिस्ट के लिए भी एक एज ए पार्किंग फैसिलिटी वर्क करेगा, और जिससे टूरिस्ट को भी फायदा होगा और हमारा एक जो है एक अच्छा यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, क्योंकि हमारी यहाँ से हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, तो उसका फायदा पूरे टूरिस्ट के साथ साथ इस पूरे एरिया की इकोनॉमी को मिलेगा। The project is constructed under the AMRUT, that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, and is part of the Smart Parking Initiative of the authorities, which aims at using modern solutions to considerably reduce parking on roads and generate revenue for the city. The elevation of the main building has been kept depicting Dogra heritage and culture in blend with the architecture of the surrounding heritage buildings. Last year, record 3,506 projects were completed in district Capex in Jammu. This financial year's budget of Jammu district Capex has been increased to 1,442 crore as compared to rupees 700 crore in the last financial year for boosting local economy and adding value to city's growth potential. Agriculture is the backbone of Jammu and Kashmir's economy. There are a number of centrally sponsored schemes that help in promoting farming and its branches, such as the horticulture, floriculture, fisheries and others. Moving on the same lines, a mega exhibition cum seed Mela was recently organized at the Shalimar University in Srinagar city of Jammu and Kashmir. Take a look. High-yielding variety of seeds are seeds of improved quality and are a better option for surplus and healthy production of crops. As farming is the backbone of Jammu and Kashmir's economy, authorities keep on taking a number of steps to provide better quality of seeds along with latest farming equipment to boost farming activities in the Union Territory. Moving on the same lines, a mega exhibition cum seed Mela was organized at Shalimar University in Kashmir. देखिए, किसान मेला जो हर साल लगता है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि फार्मर और साइंटिस्ट का एक तो पहले फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और जितनी भी साल भर हमने नई टेक्नोलॉजीज, चाहे वो प्रोपेगेशन के हवाले से हो या क्वालिटी इंप्रूवमेंट के हवाले से हो, तो वो सारा हम डिस्प्ले करते हैं ताकि फार्मर को पता चले कि कहाँ पे उसकी कोताही होती है प्लांट को प्रोपेगेट करने में या प्लांट को तैयार करने में। जब भी हम किसी मेले की बात करते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस ही जनरेट होती है। जैसे आप अभी हमारे डिस्प्ले पे देखते हैं तो हमारे पास इस टाइम मोर देन 50 वैरायटीज हमारी एप्पल की है, इसी तरह वॉलनट की 50 वैरायटीज, इस तरह आमंड की वैरायटीज है। तो ये सारी वैरायटीज इसलिए इस टाइम डिस्प्ले पे है ताकि फार्मर को पता चले कि जो रेड स्ट्रेन्स है उसके पास रेड कलर्ड वैरायटीज है, उसके पास ग्रीन कलर्ड वैरायटीज है, येलो कलर्ड वैरायटीज है। तो इनका अपना अपना सीजन है। जो हम अभी तक सिर्फ अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग करते थे, अब वो सीजन हमने एक्सटेंड किया, राइट फ्रॉम जुलाई से लेकर अब वो नवंबर तक अपनी डिफरेंट वैरायटीज को हार्वेस्ट कर सकता है। Organized by the Sher-e-Kashmiri University of Agricultural Sciences and Technology, that is SQUAST, the purpose of the exhibition was to spread awareness among farmers and growers regarding the latest seed varieties of paddy, fruits, vegetables and flowers. Stalls of different departments like Department of Agriculture, Horticulture, Floriculture, Fisheries and others were also set up with new varieties of seeds. Visitors purchase different varieties of seeds for paddy, vegetables, flowers and fruits at reasonable rates. कश्मीर एक एम्बिशियस प्रोग्राम की तरफ जा रही है। हम कह रहे हैं कि हम सब्सिस्टेंस से कमर्शियल एग्रीकल्चर करेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फार्मर को सीड और टेक्नोलॉजी और नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो किसान मेला हमने एक किया, लेकिन साल में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी ऐसे किसान मेले अपने केवीकीज के थ्रू से करते हैं। और किसान को हमने एम्पावर करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको टेक्नोलॉजी देनी है, उसको सीड देना है और उसको प्लांटिंग मटीरियल देना है ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए और उसका जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस वो बढ़े। और अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि वो एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंच जाए। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने काफ़ी सारी कंपनीज को यहाँ पे लाया जो मार्केटिंग करती हैं, और हमारी ऐसे प्रयास हैं कि हम अपने फार्मर्स को किस तरह से कमर्शियल फार्मर बनाएंगे। इस
जो किसान मेले का एक खास बात आज ये भी है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आज उनका एग्जीबिशन हो रहा है और वो एक फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है, अप्रोच है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जो है ना हम इसमें और ज़्यादा जो सूरत लाएंगे। बहुत फ़ायदे हमारे ये 2 रोज़ा मेला हमारे लिए बहुत कारआमद है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, अगर यहाँ पे एडवांस में लोगों को पता चले, बहुत सारे आते भी हैं, तो दूसरी बात यह है कि हमें इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो किसान लोग हैं वो आते हैं, उनको पता चलता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इससे किसानों में भी ये अवेयरनेस आती है कि कैसे हमें चलाना, हमें कैसे अपने खेत वेत बनाना। Agriculture and its subsidiaries like horticulture, floriculture, sericulture and sheep animal husbandry employ a large percentage of J&K's population. Apart from high-yielding variety of seeds, latest machinery was also available at low rates for purchase. Visitors were effusive of the efforts of the government and wanted more such exhibitions to be organized for them. डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ खुला है, खुले बाजार में है, खुली दुकानों पर है और आसानी से हर कोई इंसान जो किसानियत करता है, जो किसान है, वो तो हर जगह पहुँचता है और देखता है हमारी सब्जी कैसी होती है, हमारा ये पेड़ पौधा कैसा होता है, हमारा जानवर कैसा होना चाहिए, हमारे मुर्गे कैसे होना चाहिए, और सब कुछ यहाँ उनको मिलेगा एक ही जगह और इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तबादले ख्यालात भी दुकानदारों के साथ, इन स्टॉल वालों के साथ होता है। तो जो कोताही और कमजोरी किसान के कामकाज में होता है, वो मेरे ख्याल में इस मेले को देख के या ये बातें करते करते उनको सब कुछ दूर, वो शिकायत दूर हो जाएगी। Jammu and Kashmir is among the top 5 states and union territories in terms of farm incomes, with a monthly income of Rs 18,918 per farmer. A renewed thrust is also being given to organic farming to bring about a paradigm shift in agrarian policy, rural prosperity and improving the incomes and the quality of life of the farmers. And now in our special section of Incredible India, we will take you to get soaked in colourful festivities of Holi. Also known as the Festival of Colours, the occasion also marks the victory of good over evil. People smear each other in colours and sing and dance with joy to celebrate the festival. Holi in the Brij region of Uttar Pradesh is a sight to behold, where it is celebrated with immense religious fervour. Let's have a look at this year's celebrations. Smeared in colours, thousands of people in the Brij region of Uttar Pradesh were seen grooving and dancing to the beats of folk music as they celebrated the Festival of Colours Holi. Consisting of religious towns like Mathura, Vrindavan and Barsana, the Brij region is believed to be the birthplace of Lord Krishna, where he spent most of his childhood. In this region, Holi is a weekly affair, while in the rest of the country, it is celebrated just for one day. People from different parts of the country also throng the Brij region during this time to celebrate the occasion. आज जैसे होली हम मना रहे आफ्टर कोविड, वी आर एंजॉयिंग द thoroughly और क्लब में तो क्या मजा ही है। देखो हम किसे रंगे रंग में रंगे हुए हैं और यहाँ पे प्रोग्राम मड पूल और रेन डांस हो रहा है। वी आर thoroughly enjoying. Thousands of devotees gathered in the holy town of Mathura to play the Festival of Colours with laddus, a popular North Indian sweet. Devotees smeared in different colours collected laddus, danced and sang as they soaked themselves in the festive spirits. Laddu Holi marks the beginning of the festival celebrations. As part of the ritual, laddus are flung at devotees from the temple's terrace and they in turn compete with each other to catch the holy offering. It is believed that Lord Krishna visited Barsana to play Holi. While in Gokul village, men and women use chhadi to play Holi and celebrate the occasion. हमारे ठाकुर जी छोटे थे ना, इसीलिए गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है। कैसा एंजॉय हो रहा है? बहुत अच्छा। छड़ी मारी इसलिए होती है कि हमारे गोपाल जी है ना, ठाकुर जी वो छोटे हैं,
डंडे से मारेंगे तो लग जाएगी, इसलिए घड़ी की होली होती है। The Holi celebration by widows at the historic Gopinath temple in Vrindavan is another beautiful tradition that challenges the age-old taboo which bars women from participating in festivals. Thousands of widows wearing white saris get covered in vibrant hues of yellow, pink and blue as the jovial women smear each other with colored powders and flowers. अच्छा लग रहा है। आपके तो गुलाल नहीं है, अगली साल तो गुलाल भी था और यहाँ तो बिरती हो रही है, सब आनंद लेने के लिए आते हैं। कभी आपने सोचा था कि यहाँ पे तो फूलों की होली हो रही है तो किसी को अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है। ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, किसी के ऐसे नहीं हो रहा है। हम सभी होली मना रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, तो सिर्फ गाँव को क्यों नहीं, हमें उन्हें अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हैज राइट टू सेलिब्रेट। Another unique and bizarre manner of celebrating Holi is observed in Varanasi city of Uttar Pradesh, where devotees gather at Ganga river bank and smear fire ashes on each other. It is believed that the tradition of the festival started when Shiva played Holi with fire ashes with his aides to celebrate the return of his wife goddess Parvati. ये हर जगह से सबसे अनोखी होली है। यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कि शमशान घाट पे होली खिली जाती है। बनारस की अपने आप की होली है। यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, चिता से भस्म निकाल के जलती हुई चिताओं के साथ भी खिला जाता है। जो लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं उनके साथ भी खिला जाता है और कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई किसी से भी बुरा नहीं, कुछ भी नहीं मानता है। बहुत ही भव्य रूप से भस्म और चिता भस्म की होली महाशमशान में यहाँ बनाई जाती है और हर साल ये परंपरा चलती हुई आ रही है। हम सब भक्तजन यहाँ पे हर साल एक बार इस इंतजार करते हैं ताकि यहाँ पे होली खेल पाए। Celebrated at the onset of spring, Holi holds a great mythological importance that is triumph of good over evil. It is also associated with the eternal love of Krishna and his consort Radha and a riot of colors. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.